क्या आप जानते हैं कि जाकिर नाइक है कौन? सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में कि हमने भेजा एक आलमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो लोगों को बशारत दे, सीधा राह दिखाए और बुराई से रोके। अक्सर लोग इसे नहीं मानते। कुरान में लिखा है अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। मैं कितना भी दावा करूं, कितनी भी तकरीर करूं, फिर भी लोग अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानेंगे। आयत के मुताबिक आखिरत की जो हदीस आती है, आखिरत के पहले फिर मुसलमान बड़ी तादाद में होंगे, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आखिरत नहीं नजदीक आएंगी, जब तक क़यामत नजदीक नहीं आएंगी, अक्सर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी कुछ लिखा है किस तरीके से ये कायनात खत्म होंगी, कुरान में लिखा है कि सूरज और चांद एक हो जाएंगे। कुरान में लिखा है कि ये जो दरिया हैं, ये समुंदर है। हिंदू मजहब की किताब रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ? कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं। 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में इन्हें लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा मेरा बोलने का। श्री कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं? बहुत खराब लगता हूँ दाढ़ी के साथ। मैंने कभी लाइफ में दाढ़ी उगाई नहीं थी, तो आदि और शिमित का ये था, दोनों की दाढ़ी थी। तो आई थिंक वो दोनों चाहते थे मैं उनकी तरह लगूं। सो अभी एक लुक सा बन गया मेरा, सेकंड लुक, कि जब मैं थोड़ा सीरियस प्ले करूं तो मैं दाढ़ी रखूं। बट हाँ यार, थोड़ी चुभती है और खुजली बुजली होती है मुझको। मेरे जो बच्चे हैं वो किस नहीं करते जब मैं दाढ़ी उगाता हूँ। एंड दाढ़ी अगर हो तो ज्यादा मुंह नहीं धोना पड़ता, कम मुंह धोना पड़ता है। गर्मी वाले सीन्स के अंदर कोई अगर गर्मी वाली जगह हो तो बड़ी तकलीफ होती है यार, पसीना वसीना आया था। अल्लाह के रसूल कहते कि मूंछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को कतराओ। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह। The question I have is, you profess to be a man of peace. You've spoken very eloquently about the idea of peace in Islam, and I agree with you in many senses. But my question is, why then is your message still seen as so controversial? Why? I mean, you've claimed that the Home Secretary has banned you from this country because of a sort of media conspiracy. But why is there a broader sense of discontent with your message? Brother, you have to understand that any person who's popular, there are bound to be people who are against him, irrespective whether the popular person is doing good work or bad work. And the best example I can give you, that today, according to Michael H. Hart, he wrote a book saying the 100 most influential people in the world history. Though he's a Christian, he put number 1 most influential human being as Prophet Muhammad, peace be upon him. But today, if we analyze the maximum books written against any human being on the face of the earth, it is Prophet Muhammad. मैं फौरन मानूंगा, चैलेंज करता हूं मैं। एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक पे जाके बोलता हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं कि आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मैं जब जानता हूँ मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे अच्छे लोग का, वही बात, मैं हक की बात हूँ, किससे डरना? खुले मंच पे कह रहा हूँ, मुझे आजादी इस देश में, अगर किसी को आने का मुकाबला करने का तो डायलॉग भी करने को मैं तैयार हूँ। ऐसा आदमी जिसके पास इल्म है, कोई भी हिंदू, कोई भी क्रिश्चियन दुनिया में जो अपने खुद की तकरीर पे 10,000 लोग को गैदर कर सकता है। यहाँ माशाल्लाह कितने लोग हैं? यहाँ तकरीबन 5-10 लाख लोग हैं, बराबर। सिर्फ 10,000 अपनी तकरीर पे अगर वो जमा कर सकता है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार हूँ। वंदे मातरम पढ़ते हैं, उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं।
ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में, और गलत है हिंदुइज्म में भी। हिंदुइज्म में भी आपको इबादत सिर्फ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मजहब को नहीं जानते, अपनी मजहबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के खिलाफ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खिलाफ है, भगवान के खिलाफ है, तो ऐसा गाना गाना। Will you say, son, no problem, continue? Will you say that? No. No, correct. See. What you will tell your son? My son, that teacher taught you wrong. See, already I studied 2 + 2 is 4. So I cannot put my son 2 + 3, 2 is 5. No, but if he goes to a school, before admission, do you interview the maths teacher? No. No. So suppose the maths teacher teaches him wrong. So won't you correct your son? Yeah, I will correct it. Correct. So that's the reason I'm correcting you. I love you, brother. Thanks. Because I love you, I want to correct you that what you're saying is against your scripture. Forget what the Quran says, forget what the Bible says. If you read your Hindu scriptures, your Hindu scripture says that God has got no image, has got no picture, has got no painting, has got no idol. So if you're doing idol worship, you're going against your scripture. So what I request you, brother, today when you go back home, go on the internet, type Yajurved chapter 30, verse number 3. Sweta Satara Upanishad chapter 4, verse number 90. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You're doing it out of your own free will? Yes. You have heard my lectures, so surely you will be having a substantial, some knowledge of Islam. Yes, sir. MashaAllah, sister. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah. but Allah, And I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir. Takbir. MashaAllah, sister. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus. And really you have taken a bold step. And may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more. And may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge. And your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen. May He help you to guide your parents, if you have any question, your family members, and guide your friends. You're most welcome to ask them. We also have a platform called as Al-Hidayah, which is the halal version of Netflix. It is free. When I said Netflix, everyone understands. Netflix, everyone. Halal version of Netflix. It is the largest Islamic video on demand platform and the largest platform for Islamic courses in the world. इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है, और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जुआ खेलना और बातें फेंकना ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबुलकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा We as human being cannot see the wajh, the face of Allah in this form. But when we go to Jannah, everyone in Jannah will not see the face of Allah. Only those who are in Jannat al-Firdaus or Jannat al-Firdaus or Allah, close to the Prophet, Allah will not show His face always. We would urge, we would desire to see His face. So the highest reward that any Muslim or any human being can get, Jannah is a high reward but not the highest. Jannat al-Firdaus is high but not highest. It is seeing the face of Allah, the wajh of Allah. Is anyone forcing you to accept Islam? No, nobody is forcing. Are you accepting out of your free will? Yes. Because in Islam, to force anyone to accept Islam is haram. It's haram in the religion, and it's haram, it's prohibited in most of the countries, I believe even in Dubai. To force anyone to accept a religion is forbidden. So you're accepting out of free will, sister? Yes. But that is the reason I asked you many questions. MashaAllah. Out of free will. I hope no one is bribing you. No. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. I tell them I have given them currency of the Akhirah. It says Currency of the Akhirah, and that's accepted. He was the messenger of God. Do you believe in that? No, he's bigger than messenger. He's not just a messenger. It's an insult to call my Lord a messenger. Sister, I asked We will do something to prove something, sir. What first says that what you quoted is wrong. You agree it is wrong, then we go to the next question. I don't agree. That means what you said is it's not word of Jesus. That means you're fooling the people, right or wrong? You thought I did not know, correct?
No, I'm not here to demonstrate knowledge, sir. I'm It here is not to the question demonstrate of knowledge. It is the question of Bible. You believe Bible is the word of God, correct? Yes, I do. I don't believe it is the word of God. Even though you believe the Bible is the word of God, I know Bible more than you, right? There is one thing to know the Bible, there is another thing to have the revelation of the Bible. Because you know, even when Jesus came, the people who did not understand who he was were religious leaders. They missed big time. They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible, an ambiguous statement, unequivocal statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. All are God. That's what Hinduism says. Aham Brahmasmi. What is the definition of God? I don't know. I am God, you are God. What is the definition of God? I don't know. That means you don't know, I don't know. I know myself. Okay. Who is the creator of God? Very good question. If I ask you, brother, that your friend John, he gave birth to a child. Can you guess the child was girl or a boy? Your friend John gave birth to a child in the hospital. Can you guess was it a girl or a boy? Guess. No. Girl or a boy? I can't guess. Sorry? I may not guess. Try. At least 50% you'll get right. Yeah, 50%. 1/2 chance. Okay, tell me. Boy. Whether can a man give birth to a child? No. So is it a girl or a boy? But the name can be called female. I'm asking you, your friend John. I don't know anyone female called by John. No, we can call. Na. Okay, suppose a friend who is a boy, is a man. He went to hospital. He gave birth to a child. Was it a girl or a boy? Girl. Can a man give birth to a child, brother? No. When Hindus meet Muslims, they don't try and convert the Muslims to Hinduism, correct? Yeah. But when the Muslims meet the Hindus, they try and convert the Hindus to Muslim, correct? Correct. Sister, it is like giving an example. There is a student who goes to school. Maybe he's in the 7th standard or 8th standard. There's another student who goes to postgraduate college. Maybe he's doing his master's. Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate, or the postgraduate will teach the school student? Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu Allah Muhammad abduhu wa rasuluhu. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to the tears of joy. क्या आप जानते हैं कि ये जाकिर नाइक है कौन?